So hi everyone, this is Sohan. So you're watching me at my YouTube channel, Professor Sohan Acharya Sohan. I welcome you all. So today we will read the third part of chapter 8, Reach for the Top. So we have started this series for a ninth class student and we have covered two chapters. Number one chapter was from Reach of for the Top. That was Santosh Yadav and the next one was Maria Sharapova. The next part of this chapter is basically is a poem and very interesting poem. We're gonna see that how beautifully a poet has described life. So stay tuned with me, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe it. I prepared this series for students of ninth class, but anybody can see it to enhance their knowledge. So in today's class, we will read about the poem. It's a very beautiful poem written by Gieve Patel. Basically, the poet have an idea about the life itself and into the whole literature. If we look particularly in English literature, all the creators, be it a writer, be it a poet, try to portray life from humans' perspective, from nature's perspective itself. Here also, by the story of a tree, by the life of a tree, poet conveys a very beautiful message to its reader that how a tree grows and how life within the tree grows and tree plays a very important role in our life. So इस पोएम में पोइट ने बड़े अच्छे से हमें ये चीज़ समझाई है. बेसिकली जो पोएम का स्टाइल है वो एक फ्री वर्स में लिखा गया है. Free verse in the sense of poet is not following any particular pattern of writing poetry. Whatever he felt, he just wrote it. So that is a form of free verse. Means as naturally it grows, G.V. Patel just wrote down all the process. And with the opening of this poem, it's hardly 3 to 4, there are 4 stanzas. And poet tries to make understand to every reader that what are the role of a tree in our life. It gives us oxygen. It gives us even though not only oxygen, but they have means human beings are the transformated life of trees itself. So in the beginning of the poem, poet gave a very beautiful contrast among two things that people are cutting down the trees. Poet arises one question. He arises that can cutting of a tree could be a killing of a tree? And is it easy to do so when somebody cuts the tree? Or does it really mean that they are killing the tree? So cutting of tree and killing of tree. The whole poem will be talking about from that perspective. So in the very opening line, poet goes in a very simple and straightforward way. And poet says from the very first line, it takes much time to kill a tree. Not simple jab of knife will do it. So poet declared this thing. It's a natural line that just single jab of knife. Jab of knife means it's a swift blow of knife as we are just means scorching the tree. Poet says by just doing this activity you cannot kill a tree. It has grown slowly, consuming the earth. So a poet here just making a contrast, consuming the earth. Tree consumes the earth in its own way, as human being also grows into the same way. The
पोइट ने बड़ा अच्छा यहाँ पर ये एक लाइन दी है, इट ग्रोज मीन्स नॉट ओनली ट्रीज बट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ग्रोज, उगते हैं, बाई कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, वो इसी में से पैदा होते हैं, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, वो इसकी सतह पर पलते हैं, बड़े होते हैं, पनपते हैं, फल फूल देते हैं, और फिर वो दोबारा से रीबर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं. सो ही मेंशन upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water. These are the three main components. Human beings also consume these three things. Not only human beings, but every creature on this earth. जितने भी क्रिएचर्स हैं वो इन तीनों एलिमेंट्स को एब्जॉर्व करती हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लिपार्ड्स हाइट spreading leaves. This some poetic devices are used in this particular passage, like enjambment. It means it's a literary device, poetic device, we can say. It means the sentence are being continued to the next line without a break. It has been used through the stanza. पूरे stanza में आप देख सकते हो. Means one line is continuously giving its meaning by the second line. So इसको हम बोलते हैं पोएटिक लैंग्वेज में एंजैपमेंट, ENJAMBMENT. नेक्स्ट, अब लैंग्वेज कैसे यूज की है पोइट ने, इमेजरी मीन्स जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर बनाई दे रही है, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water. So जब हम इसको इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर हमारी इमेजिनेशन के अंदर क्रिएट हो रही है. सो इट्स अनदर वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग ए पोएम. देन देयर इज ए मेटाफर ऑल्सो, एक मेटाफर भी यूज किया गया, लिपॉर्ड साइड्स. इट मीन्स पोएट हैज कंपेयर्ड द discoloration of leaves, means leopard sides means discoloration of leaves, पत्तियों का कलर ना होना, with the skin of disease, leprosy, जो human beings के अंदर एक disease पाया जाता है. When humans suffer from leprosy, the condition of human being is equal to the leaves of a tree. So there is a contrast in between these two things. So these are particular poetic devices which poet used in this passage. And definitely it simply means what I told you line by line. But if we go to write about the whole passage, then simply we can say that in this stanza, first stanza, the poet tells us that it takes a lot more than a just sudden blow of a knife to kill a tree. It requires much more time than that. Means a plant absorbs nutrients from the soil of earth and keep rising. It slowly feeds on the soil and absorbs sunlight, air, and water, and for many years, and then grows and develops numerous leaves. Similarly, human being also, we all just become in this process. If we'll think in terms of G.V. Patel's and in contrast with this poem, what is this body? It's an accumulation of food, sunlight, air, and water. And what is brain itself? It is the accumulation of the imagery of outside world. So these two things makes us. So very beautifully, poet has described how a tree grows and what are the significant role of trees on this earth. Then into the second stanza, where it says, so heck and choke, he is using the word, starting the second stanza with continuous to the first one. वो बोलते हैं, so heck and choke, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bow, which, if unchecked, will expand again to former size. So poet here simply states
कि अगर if you want to kill a tree, simply hack and chop is not going to work. Hacking chop means to cut or chop something with short or strong blow. Means like we are just cutting a jungle with a machete, fine, just cutting. So that is not going to kill the tree itself. But this alone won't do it. ये अकेले काम नहीं करेगी. Not so much pain will do it. और उन trees को ये बहुत ज़्यादा pain भी नहीं करने वाली है. Then the bleeding bark will heal. Bleeding bark. Bleeding bark means twigs, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, which are cut mercilessly. Have you seen a gardener cutting the bunches of trees or plants to just give them shape? उन्हें shape देने के लिए वो cutting करते हैं. What it says, it's not going to kill it, even though this will work in the growth of a tree. Have you seen? जिसको हम cutting बोलते हैं, a gardener cuts the plants to give its proper shape. Nature also cuts all the leaves according to the seasons. So that also symbolizes the life and death itself. That's a very beautiful message by the trees. आपने देखा होगा कि पतझड़ में जो पत्ते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और आगे फिर जब अगली सीजन आता है वो फिर से हरी पत्तियां बहुत ग्रो होना शुरू हो जाती हैं. So that symbolizes life itself, the cycle of life itself. Gieve Patel also gives some kind of contrast by this mentioning these lines, and he says, "Bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs." कहते फिर आप जब उसको काट करके गिरा दोगे फिर उसकी जड़ों में से छोटी छोटी पत्तियां टहनियां जो है वो निकलना शुरू कर देंगी. मिनिएचर बो, छोटी छोटी सी पत्तियां, which if unchecked will expand again to former size. कि अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया फिर से वो दोबारा से उसी साइज की तरफ मूव कर जाएंगे. So two basically things are used here. Jab means a sudden blow, and which we have told leopards discolored bark, which I have told in the earlier one. Then in this passage, 3 to 4 poetic devices are used. Number one, alliteration device is used. Like alliteration means it is the repetition of letter at the start of closely placed word. जब हम किसी closely placed word को repeat करते हैं, like repetition of the word bee, bleeding bark. So B यहाँ पर alliteration device बनता है. Then enjambment also, like the sentence are being continued to the next line without break, and it has been used throughout the stanza. Then another device is used, personification, means the poet has personified the trees by using the word bleeding. Bleeding means basically trees का कोई blood नहीं होता, bleeding नहीं होती, that is related to human beings, but poet is using that bleeding for trees. So that is a kind of personification, मानवीयकरण किया गया है. Then a metaphor is also used, means the poet has compared the tree's shape to the human blood in this passage. So these are few poetic devices which are being used in this poem. I hope you would understand this thing. If we go into the thorough explanation of this stanza, we can say that no matter how much humans cut and chop a tree, it won't do anything. The chopping of a bark of tree into many pieces will not be enough to destroy a tree. हमें इन वर्ड्स को समझना होगा. पोएट्री यूजिंग कटिंग, किलिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिके, इन सब का अलग अलग मीनिंग है. देन ही सेज द पॉइंट एट विच द ट्री गेट्स कट विल बी ब्लीड लाइक ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेजुअली हील फ्रॉम इट एंड ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस. देयर इज अ पैराडॉक्स. अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, विद ह्यूमन बीइंग दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई अंग जो है वो कट जाता है, एक्सेप्ट हेयर्स दैट ग्रोज नेचुरली, फाइन, इफ यू कट द हेयर फ्रॉम द डाउन साइड इट विल ग्रो इन इट्स ओन शेप with the passage of time. Nails also, if you cut the nails, that can grow to the another shape. But other parts of the body cannot grow into the previous shapes. So human being के साथ ऐसा possible नहीं है. But nature ने
ट्रीज को ये पावर दी हुई है, दे कैन ग्रो into the same shape after some time. That signifies life itself. That's similarly, human beings lack that things. But in today's time, that lack has been replaced by a few scientific explorations, some biological explorations. हमारे पास आज बायो मीन्स वी कैन से हमारे लिंक्स हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल. A tree doesn't require any that kind of bioclaims that can grow itself. सोच करके देखो, अगर ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल हो कि किसी की कोई हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, एंड आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसी शेप में अगेन ग्रो करना शुरू कर दे. आई डोंट नो कि कितना समय इसको लगेगा, बट इन फ्यूचर अगर हम देखें, इट कैन बी पॉसिबल बाय द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस. सो पोइट वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स this comparison among trees and human beings. I hope you are getting. Now, coming to the next passage. In this is, now, अब वो डिनाई कर रहा है किस चीज को? नो मीन्स जो पीछे कहा है उसको डिनाई कर रहा है सिंपली एक स्टेट के अंदर, एंड सेज नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, दैट्स आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ. अब वो सजेशन दे रहा है कि हाउ humans try to kill all the tree, but they are not getting they are not succeeding in that also. The roots is to pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. बड़े अच्छे से एक मीन्स पूरी ह्यूमैनिटी को और ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंस को और पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट को चैलेंज करता है जीव के लिए यहाँ पर कि इफ यू वांट टू किल ए ट्री तो आपको क्या करना होगा? जस्ट कटिंग ऑफ द ब्रांचेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जस्ट कटिंग द ट्री इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. आपको क्या करना होगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. जो रूट्स है, जो उसकी जड़ें हैं ट्री की, वो आपको धरती से खींच के निकालने पड़ेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच मीन्स द रूट्स ऑफ ट्रीज आर बीइंग expanded and connected to each other in which way we don't know. Then it is to be roped, then again, and tied and pulled out. That is not possible. Snapped out or pulled out entirely. क्या हम धरती में से किसी भी पेड़ की पूरी तरह से जड़ों को निकाल सकते हैं? नो. कोई ना कोई उसका जो अंश है वो वहां पर जिंदा रह जाएगा, एंड दैट विल अगेन गिव टू द टर्न टू द अनदर लाइफ. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए ट्री. देन आउट फ्रॉम द अर्थ केव मीन्स द अंडर एरिया ऑफ अर्थ, गहराइयों में, धरती की गहराइयों से उसको निकालना पड़ेगा. और एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम एक ट्री की स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर पाते हैं. आई वांट टू मेंशन वन एग्जांपल हियर. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बैम्बू ट्री? हम यहाँ पर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि जो बैम्बू ट्री है, इट टेक्स टू मच टाइम टू ग्रो अपॉन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. धरती की सतह पर उगने में वो 5 से 6 साल लेता है उसका बीज. 5 से 6 साल वो करता क्या है? वो धरती के नीचे की तरफ जाता है, इनसाइड, और वो कम से कम 200 से 250 फीट तक नीचे चला जाता है. आफ्टर देन after 5 to 6 years it takes 6 months to grow at the height of 10 feet, but within 2 or 3 months it means splendidly goes to the sky to the heights of 150 and 200 feet. मीन्स ऊपर आने से पहले वो नीचे धरती की तरफ जाता है. So that is the beauty of that tree. Here also, poet is giving that sort of example that if human and human intelligence really wants to conquer the tree and they really want to destroy the tree, so they cannot do this. One more example. From religious point of view, हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध जी ने
जब निर्वाण पाया वो भी एक वृक्ष के पास था, नियर द ट्री। देन और हम माता सीता की बात करते हैं रामायणा से, शी यूज्ड टू सिट इनटू द अशोक वाटिका। सो अशोक वाटिका मीन्स अ प्लांट बेसिकली बिलोंग्स टू दैट टाइम। नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, सो ये आज के नहीं है, इनके जेनेटिकल हजारों सदियों साल पुराने हैं, एंड टिल नाउ अभी भी वो ग्रो होते जा रहे हैं। सो here poet is putting all together that human doesn't have that intelligence that they can destroy the tree. So in this stanza third, poet has used three hardly three poetic devices. First is alliteration. Alliteration he used into the word white and wet, W.W.E. तो वहाँ पे alliteration device यूज किया गया है. Then repetition of the phrase है pulled out, word out, fine, ये repetition है. एनजैपमेंट इज ऑल्सो, वो तो पोएम के पूरे हर पैसेज में है. अगर हम इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें द पोइट टेल्स अस दैट इन ऑर्डर टू किल ए ट्री वन हैज टू डिटैच इट फ्रॉम इट्स सोर्स. डिटैच बड़ा अच्छा वर्ड है ये. वी आर अटैच्ड बट वी ट्राई टू डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सिमिलरली वी अगर ह्यूमन बीइंग एक ट्री को किल करना चाहता है तो उसको अर्थ से डिटैच करने का सोर्स ढूंढना पड़ेगा. द ट्री हैज टू बी uprooted to kill it. The root of a tree that bind it firmly with the soil of the earth have to be uprooted. Then the roots are the most sensitive and hidden part. Then रूट्स वेरी सेंसिटिव मीन्स आप ये कह सकते हो रूट्स जो हैं हर ट्री का डीएनए छिपा करके रखते हैं, उसकी जड़ों को छिपा करके रखते हैं. द रूट्स आर वाइट एंड टेन. कभी भी आप देखोगे दे आर वाइट एंड टेन. एंड आफ्टर द ट्री हैज बीन अपरूटेड इट विल ड्राई अप बिकॉज ऑफ द स्क्रोचिंग सन. द ट्री विल गेट dried up, get twisted, become brown and hardened because the sun and air. This way the tree will finally die. Again, it say the tree may die but not decay. Die means उसकी मृत्यु हो सकती है लेकिन पतन नहीं होगा. मैंने पहले कहा था कटिंग ऑफ ए किलिंग ऑफ ए ट्री, डेथ ऑफ ए ट्री, देन डिके ऑफ द ट्री. इन इस चेन को हमने समझना है. एंड पोइट बेसिकली इन्हीं को बेस बना करके हमारे सामने एग्जाम्पल्स पुट कर रहा है. सो फाइनली जीवी पटेल सम अप his quest and his questions by the last passage. लास्ट में बोलते हैं then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अभी मैंने जो लास्ट में बताया. और फाइनली क्या करना होगा, इस ट्री को अपरूट करना होगा. अपरूट करके जब उसको छोड़ देंगे हम, ड्राई हो जाएगा. सन जो है उसकी जो सारी पावर है उसको सक कर लेगा, एयर्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगी. देन tree will dried up and get twisted, became brown and hardened because of the sun and air, and this way the tree will finally die. So this is the poem, very beautiful poem. आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े आसान से तरीके से जीवी पटेल हमारे सामने, इसके रीडर्स के सामने इसको एक्सप्लेन करता है. So killing of a tree and cutting of a tree. Now you can make a comparison among both phrases. Killing is not cutting and cutting is not killing. I hope this explanation will help you a lot. So it was all in all about this poem. Question किस तरह के आ सकते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर. Central idea of the, what is the central idea of the poem means again वही the contrast in between life happening among human beings and life happening among trees. Then there are few poetic devices which are being used. इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि which kind of poetic devices are used, जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे के सारे. फाइन. और पर्टिकुलर कुछ फ्रेजेस आए थे, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोज फ्रेजेस इन योर ओन वे. फ्री वर्ड्स फ्री स्टाइल में लिखा गया है. सो ऑल दीज टेक्निकल पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड. फाइन. ये पोएम जो है इट माइट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स इन फॉर्म ऑफ अनसीन पैसेज. यू मस्ट बी
able to give answer to all the questions which I told and explained in a very simple way in front of you. I hope मैंने बड़ा आराम से बड़े धीरे से आपको ये पोएम समझाने की कोशिश की है और आपको ये समझ में आई होगी. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं. सो वी कैन डिस्कस अगेन इन योर ओन वे. बट कुछ बचा नहीं है. It's more than enough. If you are able to write this much, it's going to give you full marks. Thank you so much.